आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
Everyone write your reviews. Both of you are given charts and write your reviews according to the instruction given on the top of the chart.
Are you ready for the session? Yes, sir. Should we start? Yes, sir. Should we start the session? Yes, sir. Okay. Then we are, because it's the last day of this 5-day capacity building program, which was meant for secondary classes. So today we will first, what we will do, we will sum up the topics of all 5 days. On the first day of the workshop, we did our sessions on pedagogy of English, which as our artist has described, that it is the methodology of teaching English, that what are the methods through which we should teach our students, and what are the things through which we can improve the teaching learning process of our students. So we discussed that on the first day of the workshop, and on the second day, this activity was based on skills, 4 skills of teaching learning process, and on the second day of our workshop was the activity or the skill was the listening skill, and on that day we had our sessions on listening, and we taught or we explained various activities, and after that we had group discussions related to this listening activity, and on the third day of this session we had a session on speaking, that what are the various methods through which we can improve the speaking skill of the students, and what are the methods through which we can inculcate this skill of speaking in our classroom, and how our classroom can be more efficient, whether that is in the skill of listening, and whether that is the skill of speaking. And on the fourth day of the session we explained reading skills, and on reading skills we had some descriptive, or we discussed this skill in detail, and after that we had some 2 or 3 activities, and after having all those activities we had group discussions in which we took the review of our all respected participants who have come from different schools of district Chamba, and as it is the last and concluding day of this 5-day workshop, and today is our last day of this pedagogy of English workshop session. Today we will discuss the writing skill, and as you can see on the slides that what is writing? Writing is the process of using symbols, and symbols can be the alphabets, and symbols can be in the form of punctuations, as we have made one TLM on this topic, one of our groups which participated in this 5-day workshop. We teach the students about the punctuation and the spaces to communicate thoughts and ideas in a readable form. Because what the language is, the communication of thoughts. What we are thinking, we have to communicate, and we have to express our thoughts. So the last skill of language teaches us how to communicate with effectively, how to express your ideas to our readers, because when we are writing, the person who is at the other end is our reader, and our writing must be readable form. The other thing that is related to this writing activities, your mastery of writing skill will be determined if you receive the desired reaction from your reader. Because while doing our teaching learning process, we talk about learning outcomes. So in language also we have some learning outcomes, and our writing must be in a form that maximum of the learning outcomes must be met. This must be the quality of writing. And the third point, which is related to writing skill, is writing
is a life skill. We cannot say that it is a subject or it is a language. It is a life skill. If you know the English language, or it can be any other language as well. So it's a skill on you, and it's a necessary part of your personality. So not an essential job related skill, because it's often the basis of which judge your learning. Whenever you are talking to some person, so person judges you on the basis of your knowledge of language. Especially when we are talking about English, the knowledge can be related to your English language, your ideas and your contribution to society. ये सारा कुछ इसी में आता है. And the fourth point which I have discussed here in this slide is, regardless of your career or occupation, that you are not supposed to that you are learning English for the sake of your career or occupation. It's a life skill. Wherever you go, if you know the English language or any language, it will be a bonus on your personality, and it will add to your behavior or your reflection. It can be the reflection of your personality. Then we are coming to next slide. Writing enables the learners to. What are the things who knows which are expected from a person who knows writing? The various things are write letters. जब भी हम किसी कोई हमारा जो लर्नर है या हमारा जो स्टूडेंट है, हम उसको राइटिंग किस तरह से सिखा सकते हैं कि वो इंग्लिश के लेटर्स को प्रॉपर्ली लिख पा रहा है. Whether he is able to write the words of English correctly and in a good form. The second point is use capital and small letters at proper places, as I have already I have previously also discussed that punctuation is that where to use capital word and where to use small letters. We impart this knowledge to our students. And the third point which I discussed is use proper punctuation marks. That one of our groups have prepared this TLM on punctuation marks. So it is also a part of their learning that proper punctuation marks are to be used at the proper place. And the next objective which will be met by this writing skill is write a composition on a simple topic. As our workshop in charge Shri Omkar Verma ji has also conveyed us that a student must learn composition, that how to write. He should not be just stick to the syllabus or essays or application which are there in our syllabus, but he must be able to compose anything else. For example, if he is going to a bank and there he has some task that, for example, he has to open an account, so he must be able to write that application or whatever letter it is according to his life situations. So hence it can be called as a life skill as well. And the next thing that we will today discuss is some basic techniques for improving writing skills. That what are the various techniques? And as our workshop is also on the pedagogy or the methodology of this language. So what are the basic things through which we can improve our writing skills? Think before you start writing. कि हमने क्या करना है, जब भी कुछ लिखना है उससे पहले हमने सोचना होता है कि क्या है, and we can make rough notes, as this will help you to structure your writing. That, for example, our learner is not able to frame an idea, or he is not able to organize an idea, then what we can do, we can give him the task that first what you have to do, you have to make rough notes on your notebook or rough, then you have to organize all those rough notes in a proper manner. And the second thing, the second method through which we can teach our learner or students this writing skill is keep a flow in your writing. Your every word, your every sentence must be connected to your previous word or what you have spoken or what you have written in your previous passage or paragraph. There must be a connection in your writing. That it must be well organized. It's not that something you are writing about here and there must be a connection in an organized manner. It must be.
And last thing that is related to this is reread your writings and proof checks your work for spelling mistakes or grammatical error. ये सब कुछ करने में आप सक्षम हो पाते हैं. And at last, thanks a lot. And anyone from the participants who have some ideas regarding this writing skill may come on the podium and give us review. इस राइटिंग स्किल के बारे में अगर आपके कोई मेथड्स हो सकते हैं, that this is the way I teach my students writing in my school. So you are humbly requested to come on the podium and you share your thoughts so that our other participant, even I, can also get new ideas through which I may be able to improve my pedagogy or my methodology of English. So sir, please, आप अगर आना चाहते हैं तो again while coming here, you must you are also requested that you have to give the review of this 5-day workshop, that what you learned from this and what you think about this workshop. Good afternoon to all participants. Respected DTI Omka Verma sir, Manoj sir, Vikram sir and Sanjay sir. Regarding writing skill, I have nothing much to say about, because the exposure for the betterment of the students, which I personally gained from our RPs as well as our colleagues who have come here for the 5 days capacity building program, it was a very fruitful for me specifically. And about writing skills, sir has stated, and before that Omkar sir has also stated, that punctuation marks are the lifeline of the writing skill. In addition, about small and capital letters and their position has also been narrated very well by our RPs. The one thing that is about the style of writing, in current scenario, we feel that the students who write in cursive, their handwriting looks pretty well, and generally it is appreciated by the people who use their notebooks. And in this field, because when I was a student, there was no such cursive handwriting, and after joining the school in 2019, I started learning this cursive from my daughter and changed my handwriting to the traditional one to the cursive one. And whosoever is my student today, all of them are writing in cursive, and when I watch and check their notebooks, I personally feel very happy and very satisfied. That was the one point which I wanted to add. And it has also been told during inspection, because what happens is, when we write a word, all the alphabets of the word should be interconnected, and that is generally not possible with the traditional style of writing. Because there was one educationist among the inspection team, he made one of our students write a sentence. When the student wrote the sentence in a cursive manner, he told that student, okay, write it separately and tell me its meaning. Because we had already told them, say this is M-A-N-G-O. So once he made all the alphabets separated, our student replied, it is M-A-N-G-O. Then he asked why it is not mango, because alphabets were not interconnected with each other. It looks pretty nice in watching, as well as it makes the sense when we interconnect the words. And I really want to thank all the RPs and request them that over a certain period of time we should have such workshop, so that the exposure that we have from here can be applied on the students, which will definitely
make them better and better. Because we have got exposure from our teachers, from all of you, then that will be applied on others, and they will keep on applying on the others who they meet in their life, and this process of improvisation will continue, and the data that we had seen in the national sample survey for the you guys, in the future I hope that will not be continued for our aspirational districts. Thank you. One and all. As far as the question of review is concerned regarding this workshop, I personally have learned so many things, because before this workshop I have attended many other workshops as a teacher as well as a BRC. But this workshop is different from all other workshops that I have attended, because there is so many things that we learned. The activity-based learning is one of the major key points of this workshop, because whenever we go in the classrooms, we just focus on theoretical part of the study, but we should also think that a human being is not that much able to listen or learn through only the theoretical style, but it also needs to participate, that is learning by doing. And through this workshop, during 5 days time, we have seen that what are the various methods and techniques through which we can input and we can expect the output from the students. There can be multiple ways that can be used in a classroom, and we can expect good results. So I think we all will use these methods whenever we will teach the students, and we will get good results. That's all. Thank you. Now I request Shri Suman Kashyap ji to come on the stage and have a review about this workshop. Very good afternoon to all respected TTI, Shri Onkar Verma ji, respected office, and my dear colleagues. As far as the review of these 5 days training, capacity building training, personally I learned many things in this workshop, especially listening, speaking, reading and writing. Earlier we all know that what is listening, speaking, reading and writing. But in this workshop, which is told all of us by elaborating through the slides each and every thing very clearly, which we can implement in our schools to improve the standards of our students. All these activities by which we can conduct in the school, campus also in schools, by which the most of the students will be benefited by this. Personally, I have interacted with many multi-talented minds of our colleagues, by which we learn most of the things from their past experience in the field of education. And because earlier I have not much experience in the education, because I am in education department since the last 7 years. Being a army personnel, I have vast experience of other fields, but in education
I learn much more, and I learn everything from every person on the daily basis. I never feel any kind of guilty to ask any person, let me know about your experience here. Whatever he has deserves the knowledge. But in this workshop, I thanks all my RPs, my TTSers, and all of you who gave me a much more knowledge about this English language. And I will promise you, I will definitely implement all these techniques in classrooms from 6th class to 12th class, by which I have the privilege to improve their study standards. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request our next colleague, Srimati Shivani Sharma ji, to come on the stage and share your review regarding this 5-day capacity building training. Ma'am, please. Respected Onkar sir and worthy RPs and my dear friends. First of all, I want to congratulate this whole team for organizing such a wonderful and fruitful workshop. So please give a huge round of applause for all this. Today, I am Shivani Sharma from GSS Khatli Education Block, Sihunta, going to review my views about this 5 days capacity building workshop. I am very happy that this workshop is very fruitful for us. We have learned about our 4 skills such as learning, speaking, reading and writing. These are the basics of our education. And if we speak beautifully, we speak impressively, we write clearly, this is the most impactful thing of our communication. So this workshop, I think, worked as an energy capsule, not only for me, but also for all of us. So, sir, we are really thankful to you. And at the end, in a nutshell, I want to say, neither the success or nor the failures affects anyone too much. Neither the success nor the failure affects anyone too much, because both are the outcomes of our action. Thanks very much. To have their review, have his or her review. Thank you, Manojji. So finally, the moment has arrived that we are on the point to close the workshop. एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम वैलिडिटी सेशन की ओर जाएंगे. Training and as a reporting of the previous 4 days I am presenting here. Because for the last sound.
छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से था, ग्रुप में शेयर करते, क्योंकि 5-4 दिनों तक आप रिपोर्टिंग करते रहे तो एक दिन नहीं बनती थी रिपोर्टिंग, इसलिए मेरी तरफ से प्रयास था। थोड़ा सा इसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से कि फोटो लैंडस्केप में लें, बट बीच में कुछ पोर्ट्रेट आ गई थी, तो थोड़ा सा लैंडस्केप में फुल स्क्रीन पे आती है और पोर्ट्रेट में हाफ आती है, वो बीच में कुछ एक ऐसी फोटोज आ गई थी। आज इस वर्कशॉप का अभी लास्ट सेशन है हमारा, दैट इज द वैलिडेटरी सेशन। राइटिंग स्किल पे हमने आज बात की। तो राइटिंग जो है वो एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा टैलेंट है जो कि हर आदमी में होना चाहिए। और जब किसी राइटर को जब मंच मिलता है तो वो बोलने से अपने आप को नहीं रोक पाता है। मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ पंक्तियाँ जो मेरी अपनी हैं सेल्फ कंपोज्ड में आपको सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हम वैलिडेटरी सेशन की ओर आगे जाएंगे। सो आई हैव रिटन अ बुक ऑफ पोइम्स इन हिंदी वर्जन की पोइम जो है वो बुक मेरी आई है, मतलब मैंने कोई किसी को देने के लिए नहीं बनाई है, अपनी कलेक्शन जो है वो एक बुक के रूप में है और अपने लिए ही रखी है बुक को। तो इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, बट अभी वो पूरी बुक बन जाए ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी, तो हिंदी का एक वर्जन जो है वो मेरे पास है। तो उसमें उस वर्जन में जो है वो उस एडिशन में रादर 75 पोइम्स हैं, एंटाइटल्ड एज मेरे शब्द मेरी पहचान। तो कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि राइटिंग की बात हो रही है तो हमें बच्चों को भी लिखने के लिए जो है वो एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए लिखना जो है वो हम अपने मन के विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को या तो बोल के शेयर कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे विचारों को जाने, तब तो हम उसके साथ बोल करके जो है वो अपने विचारों को रख सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है तो हमारे पास फिर सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? पेपर एंड पेन। पेन एंड पेपर इज द बेस्ट फ्रेंड। तो आप पेन उठाइए, पेपर उठाइए और आपके मन में जो भी है उसको लिखिए। बोलने से भी हमारा मन हल्का होता है और लिखने से भी हमारा मन जो है वो हल्का होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो कंपोज करना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए हमें जो है वो एनकरेज करना चाहिए। तो आप सुनना चाहेंगे कुछ या नहीं? यस सर, बिल्कुल हम भी सुनाएंगे। वेरी गुड। क्योंकि ऐसा है कि जब ऐसा मंच लगता है तो जो लिखने वाला होता है फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो I have so many compositions on the different themes. I have written on social, philosophical and romantic also. But एक क्योंकि राइटिंग रोमांटिक सुननी है नहीं, पहले मैं थोड़ा सा जो रहा आज का हमारा एक कंसेप्ट है राइटिंग का, उसके ऊपर थोड़ी सी पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। क्योंकि आज के समय में मैं रियलाइज करता हूँ कि जो राइटिंग है या जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन है, आजकल उसका कहीं भी इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दिख रही है। मतलब कोई भी किताबें नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारे सभी के पास मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया है, हम उसमें इतने बिजी हैं कि हम बुक्स की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट आई कैन से दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द बुक्स, कि बुक्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट ना कभी था और ना कभी आने वाले समय में होगा। सोशल मीडिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, क्योंकि बुक्स पढ़ने का जो मजा है वो अपना अलग ही है। वो सोशल मीडिया से, फोन से, लैपटॉप से या किसी भी टॉप से जो है वो नहीं आ सकता। तो इसलिए लोगों का जो राइटर हैं उनकी तरफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना जी, उसकी कीमत फिर
कम हो जाती है डेफिनेटली। तो राइटर का भी यही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे डेली पता नहीं कितने थॉट्स, कितने जो है वो कोट्स पढ़ते हैं, है ना, और उस कोट को जिसने बनाया है, जिसने उस थॉट को लिखा है, उसको कितना मतलब उसने कितना सोचा होगा, बट दैट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। और जो इजीली अवेलेबल है फिर हम पढ़ते हैं, और ऐसे मतलब बिना उसके पीछे उस राइटर ने कितनी सोच रखी होगी वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। बस वो जस्ट हम पढ़ते हैं और फिर एक क्लिक में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब यही एक जो है वो दौर चल पड़ा है आज के समय में। तो जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, उनका जो मतलब एक वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कि राइटिंग के ऊपर ही हैं। इस तरह से है कुछ। आज फिर लिखने का मन है, आज फिर बिकने का मन है, आज फिर लिखने का मन है, आज फिर बिकने का मन है, फिर सोचता हूं क्यों लिखूं, फिर सोचता हूं क्यों बिकूं, कोई खरीदने को तैयार नहीं, मेरे शब्दों को जो समझे ऐसा कोई समझदार नहीं। कोई खरीदने को तैयार नहीं, मेरे शब्दों को जो समझे ऐसा कोई समझदार नहीं। मुझे सही कीमत मिल सके शायद ऐसा कोई बाजार नहीं। इन शब्दों को सही कीमत मिल सके शायद ऐसा कोई बाजार नहीं। रद्दी के भाव बिकती हैं आज भावनाएं यहाँ, रद्दी के भाव बिकती है आज भावनाएं यहाँ, रद्दी की कीमत है शब्दों को कौन पूछता यहाँ, रद्दी की कीमत है शब्दों को कौन पूछता यहाँ। फिर भी लिखता हूं बिन भाव बिकता हूं, फिर भी लिखता हूं बिन भाव बिकता हूं, शायद कोई हो ऐसा जो मोल कर दे, शायद कोई हो ऐसा जो मोल कर दे, मेरे शब्दों को तोड़कर इन्हें फिर अनमोल कर दे, मेरे शब्दों को तोड़कर इन्हें फिर अनमोल कर दे। मतलब राइटिंग के ऊपर मेरी स्वरचित पंक्तियां थी जो कि आज की परिस्थिति को कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं। करो अगर साथी हैं, जैसे सर ने भी कहा है, वीरेंद्र जी हैं, कश्यप जी हैं, प्लीज सर कम ऑन टू द स्टेज। We have 15 to 20 minutes. सर ने कविता सुनाई तो मेरा भी थोड़ा दिल किया कि मैं भी एक कविता सुनाता हूँ जो मैंने बचपन से पढ़ी है और उससे काफी प्रेरित भी हूँ। ये कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की बोलती है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद जा रहे हैं कि जैसे एजुकेशन ये बच्चों को सीखने की जो होती है, तो हमें सीखने के लिए हमारे दिल में कभी ये दिमाग में कभी ख्याल आता है यार मेरे सबॉर्डिनेट है, ये छोटा ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। बट जहाँ तक मेरा मानना, मैं हर एक इंसान से हर एक चीज सीखता हूँ और हर सुबह मैं ये प्रेरणा लेके चलता हूँ कि इस बच्चे से सीखूंगा, उससे सीखूंगा, जो जिससे भी मेरा इंटरेक्शन होता है
उनसे जरूर सीखता हूँ। कहते हैं ना कि एजुकेशन स्टार्ट्स इन वन एंड एंड्स इन टॉप। सीखने का या पढ़ाई का कोई समय नहीं। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है वहां से सीखता है और जब तक लास्ट में अपने कब्रिस्तान में नहीं पहुंचते तब तक सीखता है। इसलिए हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पता है सबको भूख लगी है और घर भी जाना बहुत दूर दूर। केवल आप ही के लिए मैंने 10 लाइनें लिखी हैं, अपने लिए भी है साथ में। कवि जो है ना तालियों का मोहताज होता है, उसे कवि को तालियां मिल जाए या गालियां मिल जाए, आपकी क्या है? कविता मैंने व्यक्तिगत लिखी है पर इसको मैं पूरे हॉल के साथ शेयर करूंगा चेंजेस के साथ। कहता है अधूरे सुर सजाने को साज बनाते हैं, अधूरे सुर सजाने को साज बनाते हैं, हम नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं, हम नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। टीचर्स के लिए है। और जो मेन लाइन है सुनेंगे ध्यान से कृपया। हौसले कश्तियों, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और हम हैं जो डूबी हुई कश्तियों से जहाज बनाते हैं, और हम हैं जो डूबी हुई कश्तियों से जहाज बनाते हैं। दो लाइनें और इसमें। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए कोई चांद पे चाहे बुर्ज खलीफा, अरे हम तो कच्ची मिट्टी से ताज बनाते हैं, हम तो कच्ची मिट्टी से ताज बनाते हैं। और अंत में दो लाइनें हैं। ना मुझसे सीखने आना कभी मंत्र जुगाड़ के मतलब, ना कभी हमसे सीखने आना मंत्र जुगाड़ के मतलब, अरे हम तो मेहनत और लगन से रिवाज बनाते हैं, अरे हम तो मेहनत और लगन से रिवाज बनाते हैं। करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, चिराग फिर से जलाओ तो कोई बात बने। लहू जो यहाँ सूख चुका है शहीदों का, उसमें कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने। These lines are dedicated to नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सभी अध्यापक साथियों को आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदर के योग्य ईडीआई सर, आरपी साहिबान और मेरे पार्टिसिपेंट्स, सभी ने अपनी कविताएं सुनाई। जैसे सर ने कहा तो मेरा भी मन किया, मैंने जो लिखा है, मैं भी भाव रश्मियां करके एक बुक है जिसमें 30+ पॉइंट्स जो है उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, उसमें से मैं एक छोटी सी अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है कसक। क्या होता है कसक? पीड़ा। एक टीचर के रूप में एक विद्यार्थी के लिए हमारी क्या कसक होनी चाहिए, गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए हमारे अंदर क्या कसक होनी चाहिए, चंद लाइनों में वो बोलना चाहूंगा। माना लाख अंधेरे हैं राह पे, एक झोंका सा कहीं आशा की रागनी है जरूर, सफर के पिठक हैं माने, तुझे मिले चाहे तमाम वीरान राहें, लांघनी है जरूर, करे बदहाल सारा जहां, अपने फर्ज की खातिर दुआ मांगनी है जरूर, बढ़े यूं कोई रंज नहीं, बढ़े यूं कोई रंज नहीं, कर फैसला तू भी, बाजी आखिर मारनी है जरूर, बिच मझधार ना फंसे काफिला, बनके माझी नैया पार उतारनी है जरूर, जीने की खुद गर्जी छोड़ ए भावरी, जीने की खुद गर्जी छोड़ ए भावरी, हर गिरे हुए की किस्मत
संवारनी है जरूर, हर गिरे हुए की किस्मत संवारनी है जरूर। जय हिंद। चलिए सर, और तो नहीं है कोई जो मन में दबा के बैठा है? मुझे लग रहा था कि किसी का मन भारी भारी है, इसलिए वो रह ना जाए। मैं एक चुटकुला सुना रही हूँ जिससे माहौल है। एक ऐसी महफिल सजी थी तो बहुत गंभीर आदमी बैठे हुए थे और एक मेरी तरह यहाँ से सुना रहा था। तो एक भाई साहब की तरह पीछे से वो उसकी जो भी ले रहा था फोटो वगैरह, तो अंत में उसने बोला भाई साहब क्या बात है यार, आप सबसे रसिक आदमी हो। उसने बात कही, बोला रसिकता जाए बाढ़ में, मैं इसी महफिल का अंतिम कवि हूँ और अभी मैंने सुनाना है। इसी तरह से अभी मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। इन 5 दिनों में आनंद मुझे लगता है अभी आया, ऐसा तो नहीं है कहीं, वैसे तो आया पर एक रियलिटी वाला आनंद अभी आया। इसका मैं सीधा सीधा अर्थ लेता हूँ कि जो हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे तभी आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है कि जब हम अपनी मातृभाषा में या जब जो भाषा समझी जाती है तो उसमें बात करें तो आनंद आता है। ये बात जब हम दिल्ली चंडीगढ़ चले जाएं, वहाँ पे जब गद्दी लोग बोलते हैं ना बड़ी भाषा में, दस वाह वाह पूरा भरमार पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जब हम हिंदी में बात करते हैं और हम तक पहुँचती है ना तो फिर वाह वाह अपने आप हो जाती है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो सुनाना चाहूँगा कि जब कोई अपने पुराने ज़माने में चले जाओ, हर कोई पुराना तो होगा ही होगा, किसका कैसा होगा वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर जैसा भी होगा बस बहुत सारे मेरे साथियों ने लंबी लंबी कविताएं सुनाई। जिस तरह जमाना फास्ट है, मैं भी 4 लाइनें सुनाऊंगा, परंतु 4 लाइनें 4 बार सुनाऊंगा, मतलब 4 शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मेरी शेर व शायरी में बहुत ही रुचि रही है क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ और हिंदी से मेरी PhD है, परंतु इंग्लिश में भी मुझे उतना ही शौक है हिंदी की तरह ही। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी और उर्दू जिस तरीके से लयबद्ध होकर के गानों में और शायरी में आती है उसका ना तो कोई सानी होगा भविष्य में और ना कोई है। ना महफिल की बातें थी ना जमाने की बातें थी, सभी ने अपने जमाने में चले जाना। ना महफिल की बातें थी ना जमाने की बातें थी, ये तो उन चंद लम्हों के अफसाने की बातें थी। ना महफिल की बातें थी ना जमाने की बातें थी, ये तो उन चंद लम्हों के अफसाने की बातें थी। माना की कसक बरकरार है दिल में, माना की कसक बरकरार है दिल में, मगर इस सफर में बस अब ये भूल जाने की बातें थी। थैंक यू वेरी मच। नहीं करता है तो वहाँ क्या चीज काम करती है? मैंने अपने हिस्से की चादर भी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी चढ़ा दी है तेरी मजार पर। अच्छा। मैंने अपने हिस्से की चादर, मैंने अपने हिस्से की चादर भी चढ़ा दी है तेरी मजार पर। सुना है जहाँ लफ्ज पे असर होते हैं वहाँ अक्सर दुआएं काम आया करती हैं। और इतना भी मशरूफ न रहना जमाने में, इतना भी मशरूफ मतलब व्यस्त, इतना भी मशरूफ न रहना जमाने में कि फुर्सत से गुफ्तगू भी ना हो पाए। इतना भी मसरूफ ना रहना जमाने में कि फुर्सत से गुफ्तगू भी ना हो पाए। ऐसा ना हो कि दरिया जिंदा दिली दिखाता रहे और मुसाफिर प्यासा ही रह जाए। और अंतिम बस दिल की दरारें तो दोस्तों जिंदा होने से है, बस दिल की दरारें तो दोस्तों जिंदा होने से है, मरने पर तो हम शमशान भी नहीं बदल सकते। थैंक यू वेरी मच। सुननी है, पढ़नी है तो आई हैव माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आई विल शेयर द लिंक एंड यू कैन गो देयर एंड रीड माई पोएम्स। एंड ई बुक का भी वर्जन है जो मेरी बुक है, प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट में फॉर्मली I would like to thank you all the respected participants. We had a very memorable and a very
gracious period of time we have spent with you here. And I think in my career, this was the first workshop in which I have experienced that we all are the member of a same family, because एक तो हमारा सब्जेक्ट भी एक है, सभी के दर्द भी एक जैसे हैं, तब भी लगता है कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, है ना? वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये दर्द जो हमने यहाँ पे देखा है या महसूस किया है, आई थिंक इन माई करियर of 25 years of this professional career, I have experienced this workshop first time, and we too have learned so many things from you people. You all were so intelligent, you all were so cooperative, and you all have coordinated with my ERPs. And you have performed all the activities, all the works which has been assigned to you by the KRP members. And I think this is a good teamwork कि हम टीचर्स हैं और हमें बट फिर भी यहाँ पे जो कुछ भी करने के लिए एक्टिविटीज थी या जो भी काम यहाँ पे दिया गया, हमने उसको बहुत अच्छे से किया और हमारे KRPs का भी आपने सम्मान किया, उनको भी कोऑपरेट किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्कशॉप के लिए। बाकी जितना हम 5 दिनों में कर सकते थे, मॉड्यूल के अलावा भी हमने बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की हैं। एंड द लास्ट एक चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट तो ये है कि जब भी हम अपने स्कूल्स में जाएं या किसी के साथ भी जब हम ट्रेनिंग्स की बात शेयर करें, नेवर से द नेगेटिव थिंग्स अबाउट द ट्रेनिंग। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल कि कभी भी ये ना कहें कि भाई ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई या कुछ भी हमने नहीं सीखा। नहीं, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज जब से मैं यहाँ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ डाइट में, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ टीचर्स से, क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में जो एक फीडबैक फील्ड में जाती थी, जनरली क्या रहता है कि टीचर्स जा कर के जब हम यहाँ किसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो यही कह के आते हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, हम सेमिनार में जा रहे हैं। द ओनली वर्ड वी यूज दैट इज सेमिनार। आई थिंक सभी नहीं करते हैं, बट मोस्टली इन प्राइमरी सेक्टर दिस हैपन्स। तो सेमिनार इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स। So I think we should use the appropriate word where we people are going, कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो हम सही तरीके से उस वर्ड को यूज करें कि we have attended 5 days capacity building training in diet, and what we have learned a lot of things. और जिसने सीखने की इच्छा से जो आया होगा उसने डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और जो जिसके मन में सीखने की इच्छा नहीं थी उसको अगर हम 5 दिन के बजाय 10 दिन 1 महीना भी बिठा के रखेंगे तब भी वो कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि सीखने के लिए सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि हम थोड़ी सी ये रखें। दूसरा जो चीज़ है कि अपने स्कूल में जाकर करके अपने हेड के साथ जरूर डिस्कस करें कि व्हाट यू हैव लर्नड हियर या व्हाट यू हैव डन हियर फॉर द लास्ट 5 days। डू डिस्कस दीज थिंग्स विद योर हेड्स, क्योंकि हेड्स अगर नहीं भी सुनना चाहेगा उसको पकड़ करके कुर्सी पे बिठाना है, ठीक है, आप बैठो एंड आई एम गोइंग टू से समथिंग टू यू। हेड्स नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए उनको सुनाना है बिठा करके कि हमने 5 दिन क्या किया है, और जो चीज़ें कुछ इंफॉर्मेशंस जो यहाँ पे दी गई हैं मॉर्निंग में वो भी आप लोग डेफिनेटली उसके साथ शेयर करें। बाकी जो सब्जेक्टिव है वो तो हमसे रिलेटेड है ना। तो ये मैं आपसे जानना चाहता एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। और दूसरा है कि जो भी हमने सीखा है अल्टीमेट जो उसका बेनिफिट है वो कहाँ तक जाना चाहिए, बच्चे तक जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है उसको हम अपने बच्चों के साथ जरूर
एक्सपेरिमेंट करें, उनके साथ जरूर डिस्कस करें और उनको ये सारी चीज़ें जो है वो जरूर बताएं, थोड़ा सा चेंज लाएं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी सब्जेक्ट को लेकर के है कि इंग्लिश is a very going through a very bad period nowadays. So we people being an English teacher, I think this is our moral responsibility to upgrade the status of this language, and we have to achieve the objectives of this language, and that is make the students able to speak this language, and this is the, I think, general objective, and we all should work on this, ताकि बच्चे इस भाषा को थोड़ा बहुत यूज करना सीखें, जो कि हमने लास्ट 4 डेज में भी आपसे कहा है। तो ये कुछ चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप ट्रेनिंग के बाद जरूर एंश्योर करें। एंड लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक माय केआरपी टीम, इज अ वेरी डेडिकेटेड टीम वी हैव हियर, स्पेशली I would like to convey my thanks to Mr. Firoj Kumar, who is not here today, but he has rendered a very valuable services in this workshop, and I think उनके कोई कलीग हैं यहाँ पे, राजकुमार जी हैं। सर, आप मेरा मैसेज जो है वो जरूर उन तक कन्वे करें कि हम उनके बहुत ही आभारी हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन कि उन्होंने अपनी यहाँ पे सेवाएं 3 दिन तक दी, बिकॉज हमारे पास केवल 3 ही केआरपी थे। हाउएवर यहाँ से हमने 5 लोगों के ऑर्डर्स किए थे, बट वो 2 लोग किसी कारणवश जो है वो नहीं गए, एंड they have been explained for that purpose. They will have to submit their explanation with the prescribed time that has been given to them. तो 3 ही लोग गए थे, इसलिए 3 लोगों के साथ वर्कशॉप को चलाना I think it was next to impossible. So we requested Mr. Firoj Kumar to have his services here, and without any hesitation he agreed. He came and gave his valuable services here. So a very big round of applause for Mr. Firoj Kumar. And again a big round of applause for our KRP member who are present here, Mr. Manoj ji, Sanjay ji and Vikram. Thank you very much sir. अब हम सर बाहर अरविंद जी आई थिंक हमने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। सर अटेंडेंस को सर्कुलेट कर दें, अटेंडेंस कंप्लीट करके जाएं सारे अपनी। चलिए अभी इसमें सर्टिफिकेट सभी को दिए जाएंगे पार्टिसिपेशन के। ये जो हमारा सेशन है उसको हम सेरेमनी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मनोज जी कहाँ हैं? वो यहाँ पे आ जाइए, हम सर्टिफिकेट देंगे। सोमराज जी, श्रीमती सुमनलता जी, श्रीमती कमला कुमारी जी, श्री जोगिंदर सिंह जी, श्री सुमनदेव कश्यप जी, श्री पवन कुमार फ्रॉम क्यानी ब्लॉक, श्री राजकुमार जी फ्रॉम हरदासपुरा ब्लॉक, श्री हेमराज जी, श्री परीक्षित सिंह जी, आगे आ जाइए। 10 लोगों के नाम है। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं नेक्स्ट बैच बुलाना चाहूंगा श्री तिलक राज जी क्यानी ब्लॉक, श्री उत्तम सिंह जी क्यानी ब्लॉक, श्री राजेश कुमार जी गहरा ब्लॉक, श्री प्रवीण कुमार जी भरमौर ब्लॉक, श्री महेंद्र सिंह जी गहरा ब्लॉक, श्री मनीष कुमार जी गहरा ब्लॉक, श्री कुलदीप सिंह जी स्वाड़ी ब्लॉक, श्री माता राम जी चंबा ब्लॉक। ये ग्रुप किसे आगे आ जाए।
ठीक है सर। नेक्स्ट बैच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री महेंद्र कुमार जी चुल्ला ब्लॉक, श्रीमती अनामिका जी ब्लॉक, श्री मनोज कुमार जी चंबा ब्लॉक, श्रीमती स्वाति जी चंबा ब्लॉक, श्री मुकेश गई जी। बैठ जाइए, अपनी अपनी सीट्स पे। अभी आपको रिलीविंग्स मिलनी है, एटीट्यूड शीट्स मिलनी है। नेक्स्ट बैच के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री गुरविंदर सिंह जी चिमटा ब्लॉक, श्री पवन कुमार जी कलेर ब्लॉक, श्री देशराज जी गरोला ब्लॉक, श्री मेहर सिंह जी टुल्ला ब्लॉक, श्री विजय कुमार जी गरोला ब्लॉक, श्री कुलदीप सिंह जी कल्हेर ब्लॉक, श्रीमती बिंदु कुमारी जी क्यानी ब्लॉक, श्रीमती अंजना महाजन जी चिमटा ब्लॉक, श्री राजेश कुमार जी पहला ब्लॉक, श्रीमती आरती जी पहला ब्लॉक। नेक्स्ट बैच में आ जाइए वीरेंद्र ठाकुर जी बनीखेत ब्लॉक, श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी बनीखेत ब्लॉक, श्रीमती अनु देवी जी बनीखेत ब्लॉक, श्रीमती सीमा कौशल जी सिमता, योगेश कुमार जी सिमोनी ब्लॉक, श्री रसपाल सिंह जी चौड़ी ब्लॉक, श्रीमती बबीता शर्मा जी चंबा ब्लॉक, श्रीमती शैलजा मेहता जी बनीखेत ब्लॉक, श्री धर्मदेवा जी महिला ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट बैच के लिए श्री दिनेश अडवाल जी सलोनी ब्लॉक से, श्री वीरेंद्र सिंह जी चंबा ब्लॉक से, श्री राजकुमार जी भगौर ब्लॉक से, श्रीमती चित्ता लेवी जी चंबा ब्लॉक से, श्रीमती शिवानी शर्मा जी सूता ब्लॉक से, श्री नरेश दरियाल जी सूता ब्लॉक से, श्रीमती कंचन बाला जी सूता ब्लॉक से, श्रीमती गीता देवी तीसा ब्लॉक से, श्री हरीश जी तीसा ब्लॉक से, यहाँ से ठीक है। थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम चौहान है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी से बिलोंग करता हूँ। एज ए टीजीटी आर्ट्स मेरा डेजिग्नेशन है। मुझे डाइट चंबा की तरफ से एज ए रिसोर्स पर्सन मुझे नियुक्त किया गया था और ये कहा गया था कि 5 दिन की जो यहाँ ट्रेनिंग है सेकेंडरी लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे एज ए रिसोर्स पर्सन आपको बोलना है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया क्योंकि वो हमारी टीचिंग फर्टिलिटी से बिलोंग करते हैं।
कोई बड़े भाई कोई छोटे भाई, और यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा। यहाँ के टीटीआई सर श्री ओंकार वर्मा जी, अरविंद जी और हमारे डीपीओ सर मनहास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि एज ए आरपी में अपनी सेवाएं दे सकूं। जब जब भी डाइट की तरफ से कभी भी किसी प्रकार का काम मुझे दिया जाएगा, मैं बहुत अच्छे से करूंगा। और जो कोऑपरेशन की भावना और जो मेथोडोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज की हमने बताई, सभी पार्टिसिपेंट्स ने, सभी मेंबर्स ने बहुत अच्छे से उसको सीखा। कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमको टीचर से मिले, उसके लिए भी हमको इसका बहुत फ़ायदा आगे पहुंचने वाला है। जो हमारे पास था हमने सबको दिया, और जो टीचर्स ने हमको दिया वो भी हमारे लिए एक लाभदायक है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ के टीटीआई श्री ओंकार सर का, अरविंद जी का और सुमन मनहास जी जो कि डीपीओ हैं, जब मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुमार टीजीटी आर्ट्स बनीहे ब्लॉक से रोडका स्कूल में एज ए टीजीटी आर्ट्स कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर 5 दिन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग इंग्लिश के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला। हमने यहाँ 5 दिन कैसे बिताए कुछ पता ही नहीं चला, और सारे टीचर्स हैं जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। खासकर हमारे श्री ओंकार जी, अरविंद जी, वो जो मेरे आरपी साथी थे, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हर संभव सहायता की, और मैं यहाँ आकर अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। My name is Manoj Kumar. I am TGT Arts at Government Model Senior Secondary School, Tisa, Education Block, Tisa. I have been given the task of rendering my services as a resource person for the subject capacity building training. It was a 5-day capacity building training for in-service teacher of English, in which almost 80 teachers from across the district took part. And before this training, we were given the training by SMAGRA SHIKSHA, Himachal Pradesh, at Diet Solan. And here we presented our resources and we tried our level best to train the teachers from district Chamba on the pedagogy of English and 4 basic skills of English, that are listening, speaking, reading and writing. And as far as my experience of this 5-day workshop was excellent. The whole team of Diet Chamba, especially TTI sir, Shri Omkar Verma ji, Shri Arvind Chauhan ji, and they cooperated us well and provided everything, or they cooperated us very well and provided everything that we wanted during this 5-day training. And I would like to congratulate and give thanks to our RP team, which include Shri Vikram Chauhan ji and Sanjay Kumar ji. Thank you. Thanks a lot. आज डाइट में 5 दिवसीय जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो कि इंग्लिश टीचर्स के लिए लगाई गई थी, उसका आज समापन किया गया है। दिस ट्रेनिंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम 17th of October and it was a 5 days capacity building training which was specially organized for the English teachers who are teaching the 9th and 10th classes in government high schools and government senior secondary schools. In these 5 days, the module which was designed for this workshop was given by the state, and in this module different topics were discussed, and we have the KRPs who have been imparted training from the state.
Mr. Manoj ji, Vikram Chauhan ji and Sanjay ji, and especially Mr. Firoj Kumar ji, who is a lecturer in English at GSS Nagali, has given his services in this training. And in these 5 days the module was totally relevant with the students, the different topics related to the English language, which we can say that the teaching techniques, teaching methodologies and the problems related to curriculum which the students and the teacher faces in the school. About these problems the discussions were held and the solutions were found out in the training. And in addition to that, many activities were also organized to make this language easy and comprehensible for the students. Students in the schools do not take interest in this language, as they thought that this is a very complicated and this is a very difficult language to learn. But I think if the teachers take interest and teach this language properly and with involving the different type of activities, then this language can be made easy and comprehensible for the students. And I think this is a very easy language to learn, but the condition is there that the teachers make it interesting for the students. And in these 5 days RKRPs has given the different types of activities and different types of techniques, and you can see the different types of methodologies have been discussed in this training. By using those things in the schools, the teacher can make this language easy and comprehensible, and definitely the students will take interest in learning this language. And I hope that the teacher will do these things in the schools. And as per the feedback given by the teachers, they have said that this training has been remained very fruitful and very informative for them. And they have also submitted and they have also requested that these type of trainings should be organized at the frequent basis in district level or in the block level, so that they can remain familiar with the new technologies, the new advancement and the new things which are being incorporated in the curriculum from time to time. So thank you very much. This was all about this 5 days training which held here at DITE with effect from 17th of October till date. Thank you very much.